maintain a specific humidity and temperature. This is all about the useful role of bacteria in industry. Now we are studying about the harmful role of bacteria, in which we study the spoilage of food, disease in plant and animal, and bacteria as bioweapon. First one is spoilage of food. जनरली हम लोग क्या देखते हैं अपने घर में, जो फूड बहुत टाइम से रहता है उसमें से क्या होता है कि स्मेल आने लगता है. स्मेल क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं और अपना जो टॉक्सिन है वो रिलीज कर रहे होते हैं. When we eat that spoilage food, then it cause food poisoning like vomiting and other symptoms. Here the food items which may be rice, bread, anything. This food item spoiled by bacteria, and this bacteria release some toxin, and this toxin containing food, when we eat, this cause food poisoning. The common food poisoning is botulism, which caused by bacteria Clostridium botulinum. So what we have seen here, that the common food poisoning is caused by the bacteria Clostridium botulinum. Hence this food poisoning is known as botulism. Other bacteria can also cause your food poisoning like Salmonella typhimurium is the another bacteria which can cause food poisoning. Next, disease in plant and animal, and first we study the disease in plant. First disease leaf spot डिजीज. लीफ पे क्या हो जाएंगे? स्पॉट हो जाएंगे. बैक्टीरिया के स्पोर जो कि प्रेजेंट होंगे तो स्पॉट्स होंगे उस पे. ये डिजीज पाया जाएगा कॉटन में, और जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजीज इज जैंथोमोनास मालवेसियरम. जैंथोमोनास मालवेसियरम. नाउ सेकेंड डिजीज विल्ट ऑफ पोटैटो विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया जैंथोमोनास सोलेनेसियरम. जैंथोमोनास सोलेनेसियरम. Gall formation by the bacteria Agrobacterium tumefaciens. Now the disease in animal, anthrax. In this disease, swelling in body and the capacity of yielding the milk is low. Next disease, tuberculosis. In tuberculosis, this disease affect the lung. Now bacteria as bioweapon. Here the word bioweapon. Bio that means living, and weapon that means we can use this bacteria as a weapon, in which we use living organism which can cause a deadly disease for bioweapon. हमने इसे क्या समझा कि बायोवेपन में हम वैसे बैक्टीरिया या वैसे लिविंग्स को यूज करेंगे, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि काफी घातक डिजीज कॉज करते हैं. तो ये क्या करेंगे? बहुत सारे ह्यूमन या पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे. तो इसी वजह से हम बैक्टीरिया को बायोवेपन्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज बैसिलस एंथ्रेक्स इज द बैक्टीरिया विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज. एंथ्रेक्स डिजीज, फॉर एग्जाम्पल, the spore of this bacteria is present in soil in dormant condition, and in dormant condition the spore is covered by seal. Seal is the outermost protective cover. When this spore come in contact with host, this affect the lung of host. After that it come in the blood stream, and from blood stream it affect the immune system, and this cause anthrax disease. In immune system, it reproduce and multiply the number of bacteria, and this cause the anthrax disease in animal. Now, useful role of fungi. In bravery, we have to study useful role of fungi in bravery, in bakery, in cheese production, and in mushroom cultivation. Firstly, we study about the useful role of fungi in bravery. Bravery that means the wine industry. Wine industry में क्या होगा? Sugar से alcohol का formation. That means
sugar is fermented by yeast and produce ethyl alcohol and CO2, and by the process of solidifying CO2, this CO2 is also used as dry ice. From grapes we can prepare wine, and from barley we prepare beer. The yeast which is used for the purpose for fermentation is Saccharomyces cerevisiae. You have to remember this name, that the yeast Saccharomyces cerevisiae is used in wine industry or in brewery. Now second, the useful role in bakery. बेकरी क्या हुआ, जिसमें ब्रेड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे ब्रेड बनाए जाते हैं. तो ब्रेड को हम क्या देखते हैं कि ब्रेड जो है वो काफ़ी स्पॉन्जी होता है. तो हमें जो ब्रेड के लिए डो तैयार प्रिपेयर करना होता है उसमें स्पॉन्जीनेस चाहिए. देन स्पॉन्जीनेस कैसे आया? बाय द फॉर्मेशन ऑफ एयर स्पेस, एंड दिस एयर स्पेस इज formed by the production of CO2, and CO2 is produced by the yeast by the process of fermentation in that dough which we prepare for the purpose of bakery. So we can use yeast for the sponginess in dough in bakery. Now in cheese processing, चीज़ में हमें क्या चाहिए? चीज़ में हमें फ्लेवर डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट फ्लेवर चाहिए. और वो डिफरेंट फ्लेवर कैसे आएंगे? बाय द यूज ऑफ दिस फंजाई विच इज पेनिसिलियम एंड Aspergillus. Then by the use of Penicillium and Aspergillus fungi we can prepare different flavor in cheese. Useful role of fungus in mushroom cultivation. There is no need to require the process. यहाँ हमें process जानने की जरूरत नहीं. We have to know about here only the benefits of mushroom. Steps is not required in mushroom cultivation. We use mushroom as a food supplement because it is rich in vitamin and protein source. There are some edible mushroom like agaricus, penniman, etc. and there are some poisonous mushroom like field mushroom, जो हम फील्ड में जहाँ तहाँ देखते हैं कि मशरूम का एक जाति होता है, लेकिन वो क्या है? हाईली पॉइजनस है. एज फॉर एग्जाम्पल एमेनिटा मस्केरिया एंड डेथ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसका नाम है एमेनिटा फैलोइड्स. ये दोनों क्या है? दीज आर पॉइजनस एंड आर नॉट एडिबल. एडिबल मशरूम्स आर एगेरिकस एंड पेनिबन. दिस ऑल अबाउट चैप्टर 8 which is economic importance of bacteria and fungi.